अच्छा ठीक, हाँ, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम ये थ्योरम कर रहे थे, उसमें हमने कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश भी करी थी। मैंने आपको दिखाया था कि 1 implies 2, एक मिनट, फिर मैंने आपको दिखाया था 2 implies 3, फिर अब इसमें हमने ये अभी पेंडिंग है 3 implies 4 एंड 4 implies 1, बिकॉज हमें दिखाना था एक्चुअली कि these 4 statements they are equivalent, राइट। और मैंने कहा था आपसे इसको ट्राई करिएगा आप, that 3 implies 4 and 4 implies 1, आया था आपको ये, आपने ट्राई करी थी? पहले मुझे ये पूछना चाहिए। किया था किसी ने इसको ट्राई? दैट मीन्स आप लोगों ने किसी ने भी ट्राई नहीं किया, तो मुझे आपका आंसर मिल गया। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अभी हमने दिखाया 1 implies 2, 2 implies 3, अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 implies 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, विल assume 3 and will prove 4। a assume करने का मतलब ये होगा f of a closure is contained in f of a whole closure, that means mapping preserves arbitrary closeness। और मैं आपको दिखाऊंगा कि that it pulls closer sets back to closer sets, that means f inverse c, this will be closed in xd whenever c is closed in yd। ठीक है, तो हम ये करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप एक क्लोज्ड सेट लीजिए, let c be a closed set in the metric space yd, right? So it's a closed set, and और आप ये मान लीजिए, and let a, capital A, be equal to f inverse of c। ठीक है, अब आप ये लिखिए, फुल स्टॉप, देन by, देखिए we are assuming statement 3, so by virtue of statement 3 of statement 3 it follows, क्या follow होगा, it follows this f of a closure, this it will be contained, कहाँ होगा, it will be contained in f of a whole closure, because we are assuming this। ठीक है, ये होगा। Now but if I ask you what is this, what's f of a closure, in the first place what will be f of a, what's a is f inverse c, and what is f inverse c, this is basically the set of those elements of capital X whose image under f is a member of c। ठीक है, by definition of this inverse image function, f inverse c is actually this, it's actually those points in x whose image is in c, और आप इन्हीं पॉइंट्स का जो सेट है उसको आप a से डिनोट कर रहे हैं। Now if I ask you, if I apply f to each element of a, मुझे क्या मिलेगा, a में वो elements है whose image belongs to c, so therefore if I apply f to elements of a, I must get elements of c, that means f of a is a subset of c, so therefore this is contained in, because it's f of a, so it must be contained in c, ऊपर से closure है, so this is contained in c closure। यहाँ actually मैं एक और चीज यूज कर रहा हूँ, we know that if a is closed in b then a closure is contained in b closure, मैं यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा हूँ closure की, because I know that f of a is contained in c,
So therefore f of A closure must be contained in C closure. But what is C closure? If I ask you what is C closure, because C is closure, so C closure will be C. ठीक? So that means मैं आपसे यही कह रहा हूँ. Therefore f of A closure, which basically is this, ये किसके बराबर आएगा एक्चुअली? अगर आप बाय डेफिनेशन देखेंगे, this is actually the f images of elements of A closure. So it is actually this. It is actually f of x such that x varies over A closure, है ना? Because f of A closure means the f images of elements of A closure. So it will be this. ठीक. और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये किसके बराबर आप देख रहे हैं, नॉट बराबर एक्चुअली, आप देख रहे हैं इट्स कंटेनड इन C. So this is contained in C. So the set of these f images, it's a subset of C. Consequently यहाँ से फिर ये साबित होता है. Consequently अगर आप इसे देखेंगे f inverse C को अगर आप देखेंगे, which by definition is not by definition, which by our assumption is A, है ना? आप देखिए ऊपर आपने A को किसके बराबर रखा है? A is f inverse C. But अगर आप इस f inverse C को देखेंगे, this by definition is actually the set of those elements in X such that f of X, it belongs to where? It belongs to C. ठीक. अब इसे यूज करिए इसमें. यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ आप देख रहे हैं कि that f images of which elements? Of elements of A closure is a subset of C. So that means f images, मुझे कहना चाहिए था the set of f images. The set of f images of elements of A closure is a subset of C. So that means f images of elements of A closure are elements of C. So that means this set, which set? This set A closure. Because इसके जो elements है उनकी जो f images है, they are members of C, and therefore by this qualifier it that follows that this must contain A closure. देखिए, because for an element to be a member of this set, the qualifier is this: f image of that element, it must be a member of C. अब यहाँ आप देखिए, अगर आप कोई x लेंगे in A closure, उसकी जो f image है, उन f images का जो पूरा का पूरा set आता है, it's a subset of C. That means the f images are members of C. So that means every member of A closure is a member of this set also, because वो इस set का जो qualifier है उसको satisfy करता है. So when I say every member of A closure is a member of this set, it means A closure is a subset of this set. But what is this set? This is actually A. तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ. That is A closure is contained in where? A closure is contained in A. And A is already contained in A closure because A closure is A union D of A. ठीक. So A is already contained in A closure. तो यहाँ से फिर क्या साबित होता है? Full stop. Thus A is equal A closure. और जब ऐसा होता है, the set is closure. Hence, because A closure is a closure set, hence A is closure. Now A is closure. What is A basically? A is the f inverse of C. So मैं आपको दिखा रहा हूँ f inverse of C is closure whenever C is closure. So therefore, which is precisely this statement 4. So therefore 3 implies 4. अगर आप 3 use करेंगे, you can prove 4.
thus statement 3 it implies statement 4. So 3 implies 4 भी हो गया. फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा 4 implies 1. 4 implies 1 में आपको क्या करना है? You have to assume 4. That means you have to assume f inverse c is closed in xt whenever c is closed in yd. और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अगर ऐसा है, if this is true, then the function must be continuous on the whole space. It must be continuous on x. That means on the whole space. चलिए अब इसी को करते हैं. Finally, how to prove 4 statement 4 implies statement 1, assume will assume 4 will assume that 4 holders full stop not full stop यहाँ इसको continue करिए. Assume 4 and let little a in capital X, पर मान लीजिए the selection here is arbitrary, be arbitrary. Finally, to prove 4 implies 1, assume 4 और एक point लीजिए little a in X और selection आपको समझना है कि is arbitrary, where the selection is arbitrary. So now if that be the case, यहाँ से मुझे पहले एक और चीज करनी चाहिए. अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? I'm taking an element a in capital X and the selection here is arbitrary. अब इसके बाद आप क्या करिए? If capital V be a neighborhood of f of a, तो फिर क्या होगा? Then I am saying that it's a neighborhood of f of a. तो फिर एक तो ये होगा, एक तो f of a इसका member होगा, that means f of a will be a member of v, और एक और चीज होगी, and ये जो v है, because I am saying it's a neighborhood, so it must be open. v is open. अब ये open कहाँ पर होगा? Open in which space? In yd. ठीक? I am saying v is open in yd, so consequently अगर आप इसका complement लेंगे, what will be the complement of v? It will be closed in yd, because v is open in yd, so therefore its complement must be closed in yd. A full stop. Now since, अब ये देखिए, since a belongs to this set, it belongs to the set of those elements of x whose f image is in v. बताइए क्यों? Because for an element to be a member, for an element of x to be a member of this set, the qualifier is this: its f image must be a member of v. Now since f image of a is also a member of v, so therefore a is a member of this set. So a is a member of this set. But अगर आप इस set को interpret करेंगे in terms of the inverse image function, what is this set? What is this set in terms of the inverse image function? It is nothing but f inverse of v. ठीक? अभी जो f inverse of v है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. I can write this as f inverse of v complement whole complement. Because अगर आप किसी सेट पर दो बार complement लेता है,
becomes this original set. ठीक है, and this is further equal f inverse of v complement whole complement. Now the reason for this is this, इसका reason ये है because f inverse of b complement, this is equal to f inverse of b whole complement. So एक और ब्रैकेट यहाँ चाहिए, f inverse of b whole complement, and this is true for all b's in the power set of y. ठीक, यहाँ मैं ये जो v कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको b तस्वर कर रहा हूँ. ठीक, v कॉम्प्लीमेंट को लीजिए आप b, then using this property you can see this is equal to this. अगर इसको ध्यान में रखेंगे आप, this is a is a member of this set is equal to this set is equal to this set, and this set is equal to this set, so I am saying that a is a member of this set. ठीक है, अब एक और चीज देखिए, it follows by virtue of statement 4, जो कि हमारी assumption है, यहाँ पर we are assuming statement 4, so it follow, अगर आप इसे यूज करेंगे, इसे इन्वोक करेंगे स्टेटमेंट 4 को, तो क्या फॉलो होगा, तो वो देखिए आप. ठीक है, स्टेटमेंट 4 आपसे कहता है कि f इनवर्स of a closure set is again a closure set, है ना, that is what statement 4, f inverse c is closed in xd whenever c is closed in yd. ठीक, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर आप इसे देखेंगे f इनवर्स v कॉम्प्लीमेंट को, व्हाट इज v कॉम्प्लीमेंट, v कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि that it is closed in yd, so what will be f inverse of v complement, by virtue of 4 this set, ये जो ये वाला सेट है, this will be closed, right. अब इसके बाहर से एक और complement है, so therefore this is complement of a closed set, so this whole thing will be open. ठीक, तो मैं वही लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि this set is open and it contains a, so therefore it's a neighborhood of a. मैं वही लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, it follows f inverse of v complement whole complement, which basically is, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वो भी यही से क्लियर है, since this is, इसकी एक फॉर्म ये भी है, देखिए, this is equality equality equality, so this set is same as this set also, so this is basically f inverse v. तो मैं आपसे actually ये कह रहा हूँ, so it follows this, it follows f inverse of v, which is this, और ये जो है this is a neighborhood of a, so that means basically f inverse v is a neighborhood of a. This equal to this is a neighborhood of a. A neighborhood of a means it's open and it contains a as an element. अब आप क्या करिए, let capital W be equal to f inverse v. ठीक, सो कैपिटल W मैं ये ले रहा हूँ, एंड अगर आप डेफिनेशन यूज करेंगे f इनवर्स v को, कि अगर आप डेफिनेशन यूज करेंगे f इनवर्स v की, तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कैपिटल W को लीजिए आप, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ x whose image is in v, बेसिकली दिस इज W. ठीक है, अब इफ दैट बी द केस, यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस इज अ नेबरहुड ऑफ a, और मैं W को f इनवर्स v ही ले रहा हूँ, सो इट फॉलोज W इज अ नेबरहुड ऑफ a. Let W be equal to this, then capital W is a neighborhood of A. ठीक, it's a neighborhood of A, full stop. Further, अगर आप एक और चीज यहाँ देखेंगे, if I ask you what is f of W, by definition f of W means this, it means f of little w as little w varies over capital W, so that means it is the set of f images of elements of W.
अब यहाँ आप कह रहे हैं कि that W is the set of those elements whose F images are in V. So ये जो है, since this is the F images, this is a set of F images of elements of W, and image of every element in W is in V. So therefore this must be a subset of V, because image of every element in W is a member of V, is an element of V. So therefore this must be a subset of V. तो देखिए अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ. Let's summarize this. मैं आपको दिखा रहा हूँ, given any neighborhood V of f of A, because मैं यहाँ जो article use कर रहा हूँ it's indefinite, so V can be any neighborhood of f of A. ठीक है, हमने V कोई neighborhood लिया था, so that means it can be any neighborhood. So मैं आपको दिखा रहा हूँ कि given any neighborhood of f of A, given any neighborhood V of f of A, corresponding to this neighborhood there is a neighborhood W of A such that f of W is contained in V. इसका मतलब क्या है? F is continuous. कहाँ पर continuous है? Thus by definition of continuity it follows the function f is continuous at A. So it's continuous at A. Now this A, it has been chosen arbitrarily. अब देखिए ऊपर, ये जो A हमने लिया था, it was chosen ये the point A, it was selected arbitrarily. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ it's continuous at A. A was chosen arbitrarily, so that means it's continuous at every point of the space. Since A in X was chosen arbitrarily, it follows F is continuous at each point of the space. That means F is continuous on the whole space X. Stop. Which is precisely the statement 1. So therefore statement 4, it implies statement 1. This completes proof of the theorem. So these 4 statements, they are equivalent. They are all equivalent to the continuity of the function on the whole space. ये 4 statements की मैं बात कर रहा हूँ. These 4 statements, they are all equivalent to the continuity of f on the whole space. So function which is continuous on the whole space, it pulls open sets back to open sets, it preserves arbitrary closeness, and it pulls closure sets back to closure sets. और सबसे मेरे लिए सबसे जो इसकी ना सबसे जो actually these one हमने ये establish किया ना, these are all equivalent, so logically they imply one and the same thing. ये बस एक ही चीज की वो इशारा कर रहे हैं. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मेरे this is close to my heart, because इसकी एक beautiful interpretation है, वो interpretation ये है: a continuous mapping, it preserves arbitrary closeness. ये हर एक कोई closeness को preserve नहीं करती है, but it preserves only arbitrary closeness. ये हो गया. अब आप अब आप ये देखिए, बिफोर एक्चुअली मुझे डेफिनेशन यहाँ लिखनी है, व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगा आपको. आप यहाँ ये करिए, कंसिडर x underlying set x with a metric d and the same underlying set but this time with a different metric sigma. आप ये करिए, consider xt and
X sigma be two metric spaces। और जैसा कि एविडेंट है यहाँ पर इनका जो अंडरलाइंग सेट है वो सेम है with the same underlying set। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद कंसिडर द मैपिंग, इसे आप कंसिडर करिए। कंसिडर द मैपिंग दिस I, capital I, from X into X, defined by I of X, the image of a point little x and capital X under I is defined to be X। Now if that be the case, that means if the mapping is defined in this way, तो ये कौन सी मैपिंग बन जाती है फिर? ये कोई ऑर्डिनरी मैपिंग नहीं है, इट्स स्पेशल मैपिंग। इसको क्या कहा जाता है? इट्स दी, इसका एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है इस मैपिंग के लिए, एंड द नेम इज, इट्स बेसिकली द आइडेंटिटी मैपिंग। और इसका भी एक रीजन है कि हम इसे आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। इट टेक्स अ पॉइंट टू इटसेल्फ, इट टेक्स एक्स टू इटसेल्फ। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो आप समझ लीजिए क्या है। द इमेज ऑफ अ पॉइंट लिटिल एक्स अंडर आई इज सेम एज द लिटिल एक्स। ठीक है, आप इस मैपिंग को देखिए। अगर आप इस मैपिंग को देखेंगे देन, या नॉट देन, ऐसे लिखिए क्लियरली, क्लियरली अगर आप इस आई को देखेंगे, आई इज अ बाइजेक्शन। है ये बाइजेक्शन? बिकॉज बाइजेक्शन के लिए इट शुड बी एन इंजेक्शन, दैट मीन्स इट शुड बी इंजेक्टिव एंड इट शुड बी सर्जेक्टिव। और इसमें ये दोनों चीजें हैं, इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। इंजेक्टिविटी तो बहरहाल उसमें कुछ है ही नहीं, बिकॉज इफ आई से दैट आई ऑफ x1 इज सेम एज आई ऑफ x2, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज आई ऑफ x1? बाय डेफिनेशन I of x is x, so what will be I of x1? X1 x1. on So saying that I of x1 is same as I of x2, it amounts to saying that x1 is same as x2, and this means I is injective, it is one to one। ठीक, तो ये होगी इंजेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी जो बहरहाल उसमें भी कुछ करना ही नहीं है आपको, बिकॉज अगर आप कोई लेंगे, इफ यू टेक लेट x नॉट बी सम मेंबर इन कैपिटल x, देन अगर आप इसे देखेंगे I of x नॉट, बाय डेफिनेशन I of x नॉट इज इक्वल टू x नॉट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस x नॉट which was chosen arbitrarily, मैं आपको दिखा रहा हूँ this x नॉट, it can be seen as the I image of something। ठीक, x naught can be realized or it can be seen as the I image of some point x naught in the space x। So that means this mapping is surjective also। Then since I of x naught is same as x naught, it follows this I is surjective also। It is injective, it is surjective, so that means it's a bijection। ठीक, so it's a bijection। bijection तो है ये, इट्स ऑलवेज अ बाइजेक्शन। ठीक है, बट कंटिन्यूटी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यू कैन नॉट से दैट आई इज कंटिन्यूअस, because you have to see this I as a mapping acting between these two metric spaces, and for this mapping I to be continuous, आपको क्या चाहिए? मैं एक्चुअली मुझे यहाँ मतलब प्रिसाइजली लिखना चाहिए था। मैं यहाँ चार इसको देख रहा हूँ, इस मैपिंग को
as a mapping from the metric space xd into the metric space x row, x sigma. That means domain space में जो मेरी metric है it is d, whereas the metric in the codomain space it is sigma. ये तो मतलब this is true always irrespective of the choice of metrics. This fact that I is a bijection, this is always true. लेकिन continuity is not always the case. There are situations where this I is not continuous. Now if it turns to be continuous, if I is continuous, तो फिर क्या होगा? If I ask you, if I is continuous, if I is continuous, then जो अभी हमने किया उसके हिसाब से ये होगा, then I inverse of u, this will be open. कहाँ open होगा? In which space? X X D with which metric? किस metric में होगा ये? It will be open in xd because domain space की metric है ना, f I inverse of a subset is a subset of the domain, ठीक? So this will be open in the domain space. That means it will be open in xd. और ये कब होगा open in xd? Whenever. What is the criteria or what is the condition? The condition is this: whenever u is open in, because मैं आपसे कह रहा हूँ if ना, कंडीशन ये है अगर ये कंटिन्यूअस है, if this mapping जो मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ I from xd into x sigma, if it is continuous, तो फिर ये होना चाहिए जो अभी हमने थ्योरम देखी ना, उसके हिसाब से फिर ये होना चाहिए I inverse of u, it will be open in xd whenever u is open in where? X row x sigma है ना, सुन लो x sigma. अगर मैंने कभी रो कहा होगा वो गलती है मेरी, इट इज एक्चुअली सिग्मा, ठीक है? yes sir ये होगा I inverse u, it will be open in xd whenever u is open in x sigma. That means whenever this is an open subset of x sigma, because ये एक different metric space है, तो इसकी जो इमेज है अंडर दिस, एक्चुअली नॉट इमेज, इसकी जो इमेज है अंडर दिस इनवर्स इमेज फंक्शन एसोसिएटेड विद I, it will be open in xd, ठीक? Now if I ask you what is I inverse of u, what is I inverse of u? In the first place it is the set of those elements of x, by definition मैं कह रहा हूँ, it is the set of those elements of the domain of I whose I image belongs to u. But what is I image of x? It is actually x, because I of x is x. So this set is same as the set of those elements of x such that x belongs to u. And what is this set? अगर आप इसे देखेंगे, this is nothing but it is u. And those elements of x such that x is in u, so that means it's u. So that means I inverse of u is actually u. तो अगर आप इसको अब लिखेंगे by incorporating this piece of information, तो आप ये कह सकते हैं. Thus मैं आपको ये कह रहा हूँ फिर. Thus if f from sorry, not f, I, the identity mapping. Thus if I from xd into x sigma, if this is continuous, तो फिर ये होगा. मैं इसको अब समराइज कर रहा हूँ. The summary is this. If हमने जो ऊपर किया था ना उसकी summary है, मैंने आपको दिखाया if f is if this mapping I, if it is continuous,
मैपिंग फ्रॉम एक्स डी इंटू एक्स सिग्मा, तो फिर ये होगा I inverse u, it will be open in xd whenever u is open in x sigma. और फिर मैंने आपको यहाँ दिखाया कि this I inverse u is actually u, तो मैं इसमें इसको अब ऐसे कह सकता हूँ, thus if I from xd into x sigma is continuous, then तो फिर ये होता है, then I inverse u जो हमने देखा वो u के बराबर आता है, then u is open in xd whenever u is open in x sigma, तो फिर यही होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो चीज, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसी को मैं लिख रहा हूं by incorporating this piece of information that I inverse u is actually u। ठीक, तो I inverse u which is actually u, तो मैं कह रहा हूं u will be open in xd whenever u is open in x sigma। अब अगर आप इसको देखेंगे, एक्चुअली मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं व्हाट इट मींस। आपसे कह रहा हूं whenever u is open in x sigma, it's open in xd also। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, that is if I from xd to x sigma is continuous, then every open set in x sigma is open in xd। मैं वही कह रहा हूँ ना ऊपर, whenever u is, जब भी u open होगा x sigma में, u will be open in xd also। So that means every open set in x sigma is open in xd। x sigma में जो भी sets open है, they are also open in xd। If a set is open in x sigma in the metric space x sigma, it's also open in xd। ये कब होगा? If the mapping I from xd into x sigma is continuous। अगर ये continuous है identity mapping। ठीक, अब मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको दिखाया, मैंने अब ऑलरेडी पॉइंट आउट करके रखा है कि इट्स अ बाइजेक्शन, सो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बाय द वे, इफ आई आस्क यू, ये जो I इनवर्स है ये कहाँ से कहा जाएगी? I is a mapping from xd into x sigma, so I inverse, it will be a mapping from x sigma to xd। By the way, this I inverse here, ये बस सिंपल है, अदरवाइज इट्स एक्चुअली I एज अ मैपिंग, ये वही है। हाँ, अगर आप इसको यहाँ, बिकॉज हम यहाँ डोमेन स्पेसेस में, because I am seeing this I inverse as a mapping from a metric space into this metric space, तो उस सेंस में I और I inverse सेम नहीं है। Why? Because I का जो डोमेन है, it is, what is the domain of I? The domain of I is xd, whereas the domain of I inverse is x sigma। तो अगर आप इनको देख रहे हैं, इन मैपिंग्स को as mappings from, as mappings acting between two metric spaces, then these are different mappings। हाँ, अगर आप simply function rule में interested है, then I and I inverse are same। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ function rule में interested है, if you are only interested in the rule of the functions, then I and I inverse are same। लेकिन अगर आप इनको देख रहे हैं as mappings acting between two metric spaces, then these are different mappings। I is not same as I inverse अगर आप इनको देख रहे हैं as mappings acting between two metric spaces। The reason is straightforward। The reason ये है, जो I का जो domain है, it is the metric space xd, whereas the domain of I inverse is the metric space
x सिग्मा, सो ये सेम नहीं होंगे इस सेंस में। अब अगर आप इसे देखेंगे आई इनवर्स को, अगर आप देखेंगे इफ दिस आई इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, पहले तो ये एग्जिस्ट करती है, अब इफ दिस इज कंटिन्यूअस, इफ आई इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो फिर क्या होगा? जो अभी हमने ऊपर देखा ना उसके हिसाब से मैंने यहाँ आपको दिखाया, इफ आई फ्रॉम एक्स डी इंटू एक्स सिग्मा is continuous, then every open set in X sigma is open in XD. अब अगर ये हो रहा है if I inverse is continuous, तो फिर क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है? Every open Every set open in set in XD. XD is open set in X Then every sigma. open set in the metric space XD, it will be open in, then actually मुझे लिखना चाहिए every, then every open set in metric space XD will be open in the metric space X sigma. So if the identity mapping acting between xd to x sigma is continuous, it means every open set in x sigma is open in xd, and furthermore if it is inverse is also continuous, then it means that every open set in xd is also open in x sigma. ठीक ना? अगर ये दोनों चीजें हो रही है, अगर I और I इनवर्स अगर दोनों कंटिन्यूअस है, फिर आप में से मुझे कोई बता सकता है कि क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको ना प्रोसेस करना है अपने दिमाग में। अगर I continuous है, I acting from between xd to x sigma, if it is continuous, then it means every open set in x sigma is open in xd. And if the I inverse which acts between x sigma to xd, if it is continuous, it means every open set in x sigma, if I inverse is continuous, then it means every open set in xd is open in x sigma. चलिए इसको लिखते हैं। पहले हमने ऊपर देखा I is continuous, इसकी implication यही थी, it implies every open set in X sigma is open in XD। ठीक, इसी तरह से अभी हमने देखा कि if I inverse is continuous, इसकी implication ये है, it implies every open, in fact the converse is also true, the I is continuous, this is true if and only if, same is the case here, ये भी आप easily देख सकते हैं, the converse is also true, I inverse will be continuous if and only if every open set in XD is open in X sigma। ये है इनकी implications, continuity of I implies this and continuity of I inverse implies this। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये दोनों चीजें hold कर रही है, that means if I as well as I inverse, if they are both continuous, फिर क्या होगा? Matrix space should be equal then. नहीं, कैसे कह सकते हैं आप? आपको खाली इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ओपन सेट्स, अब बस मुझे वो बताइए जो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं लॉजिकली। Continuity of I implies this and continuity of I inverse implies this। अब अगर दोनों कंटिन्यूअस है, I और I इनवर्स अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा, if I and I inverse are both continuous, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, then तो फिर ये होगा, the collection of D open
subsets. When I say D open subsets, it means open in the matrix space XD. D open means open in matrix space XD. It actually means open in matrix space XD. उनको हम कहेंगे D open. तो ये होगा the collection of D open subsets of X. It will be same as the collection of sigma open subsets of X. Again, when I say sigma open, it means open in the metric space X sigma. This means open in metric space X sigma. ठीक है? तो ये होगा. If both are continuous, the collection of D open subsets will be same as the collection of sigma open subsets. अब देखिए, continuity of I means every open set in X sigma is open in XD. So the collection of sigma open subsets is a sub collection of D open subsets. Why? Because every open set, मैं आपको इसको ना ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ. ये जो इक्वालिटी मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ ना, ये असल में इस तरह से आती है. अगर आप सिंस कह रहा है कि I is continuous, now I is continuous, it means every open set in X sigma is open in XD. So that means the collection of sigma open subsets is a sub collection of D open subsets. ठीक है? So D open subsets की जो collection है, it contains the sigma open subsets because every open set in X sigma is open in XD. So every sigma open is D open. ठीक? Every sigma open is D open means D open sets की collection बड़ी collection है. So वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ. The collection of D open subsets, it contains the collection of sigma open subsets. अब यहाँ आप continuity of I inverse भी assume कर रहे हैं और उसकी implication ये है. अब अगर आप इसको interpret करेंगे in terms of this inclusion, यहाँ आप कह रहे हैं कि every open set in XD, so that means every D open is sigma open. So that means every D open is sigma open. That means this collection of D open sets is also contained in the collection of sigma open subsets. So यहाँ ये हो रहा है, this collection is contained in this and this collection is contained in this. So the two collections actually must be equal. So these two collections must be equal. तो I और I inverse अगर ये दोनों continuous है, इसका मतलब असल में फिर ये होता है. Collection of D open subsets will be same as the collection of sigma open subsets. अब ये जो collection of all possible open subsets जो आती है ना, इसको हमने एक नाम भी दिया था. What is the name for this collection? This is actually the topology. Actually the metric topology. Metric topology induced by which metric? यहाँ आप किस collection की बात करें? You are speaking of the collection of D open sets. So it is the metric topology induced by the metric D. और आप कह रहे हैं कि that it is same as the metric topology induced by the metric. यहाँ आप किस collection की बात करें? You are speaking of sigma open sets. So this is the topology induced by the metric sigma. So मैं आपको ये कह रहा हूँ actually, if the identity mapping as well its inverse, if they are continuous, then the metric topologies are same. If you have a situation like this, you have a mapping, identity mapping, acting between a metric space XD into a metric space X sigma. Now if this I and I inverse are continuous, तो फिर ये होता है, then this is true. Then the metric topology induced by the metric D on X
is same as the metric topology induced by the metric sigma on X. तो फिर ये क्या करती है, ये जो दो metrics है, they induce the same topology on the underlying set if the identity mapping as well as its inverse are continuous. ठीक. अब इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि identity mapping is a bijection. अब अगर ये भी हो रहा है इसमें I and I inverse are continuous, तो इसका मतलब क्या है फिर? It will be a homeomorphism. So that means if the identity mapping from a metric space xg into a metric space x sigma is a homeomorphism, then actually the two metrics induce the same topology on the underlying set. और ऐसी metrics को हम कहते हैं equivalent metrics. तो आप ये definition लिखिए. मैं असल में इस equivalent term को justify कर रहा हूँ. इनको equivalent असल में इस वजह से कहा जाता है. Because eventually जो इनकी metric topologies होंगी वो same होंगी. इसको लिखिए आप. Equivalent metrics. Let capital X be a non-empty set stop if D and sigma are two metrics on X, comma, then these two metrics D and sigma are said to be equivalent or said to be equivalent. They are said to be equivalent metrics, not equal but equivalent metrics. जरूरी नहीं कि ये बराबर ही होंगी, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि that these are equal. मैं आपसे कह रहा हूँ these are equivalent. Being equivalent doesn't mean they are equal. You see, they are equivalent if and only if and only if. The criteria is this: if and only if the identity mapping I from xt into x sigma, if this mapping is a homeomorphism. ठीक है? This is the criteria for two metrics on the same underlying set to be equivalent. आपको यहाँ समझना है कि क्या हो रहा है. You have a set X, non-empty set, and you have two metrics on X, D and sigma. Now these two metrics, D and sigma, they are said to be equivalent if and only if the identity mapping from xt to x sigma is a homeomorphism. इसकी एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ. In fact, it's a standard example. Let X be a non-empty set and D be a metric on, एक सेकंड, चीजें अरेंज करनी थी थोड़ी सी. And D be a metric on X, full stop.
if d star from x cross x to 0 1 be defined by this thing. If d star be defined in this way, d star of u comma v, if it is defined to be this d of u comma v divided by 1 plus d of u comma v. पहले आप चेक करिए जो मैं क्लेम कर रहा हूँ क्या वो हो रहा है यहाँ पर या नहीं. Find it by this for u comma v in x cross x. अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग एन एलिमेंट u comma v और कहाँ ले रहा हूँ मैं ये कहाँ से ले रहा हूँ मैं इसको ले रहा हूँ from x cross x. Now d is a metric on x, so therefore d is a mapping from x cross x to 0 infinity, right? वो हमारी assumption है ना यहाँ पर. आप देखिए assumption क्या है हमारी assumption में ये है पहले let x be non-empty and d be a metric on x, right? D is a metric on x, so therefore when I say d is a metric on x, it means this. It means d is a mapping from x cross x. और ये कहाँ जाती है? It goes into, since it's a metric, so it goes into this set 0 infinity. Right? तो ऐसा होगा. अब यूजिंग दिस d मैं एक और मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं d स्टार से डिनोट कर रहा हूँ. अब इस d स्टार का एक्शन क्या है? एक्शन इसका इस तरह से. If you take an element u comma v in x cross x, इसकी जो d स्टार इमेज है इट्स डिफाइंड टू बी दिस. पहले आप देखिए डज इट मेक सेंस. मैं आपसे कह रहा हूँ इट मेक्स सेंस. व्हाई? बिकॉज d of u comma v it makes sense. Why? Because d is a mapping from x cross x into 0 infinity, so therefore ये जो होगा this d of u comma v it must be a member of 0 infinity. ठीक. सो न्यूमरेटर मेक सेंस. अब आप डिवाइड कर रहे हैं. आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 1 प्लस डी ऑफ यू कॉमा वी. इंश्योर करना है आपको कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0 और वो यहाँ नहीं होगा बिकॉज इट्स 1 प्लस समथिंग और जो समथिंग आप ऐड कर रहे हैं इट इज d distance because d is a metric, so it's non-negative, so you are dividing by a quantity which is actually 1 plus a non-negative quantity, so this is positive, so therefore it's a real number. This is a positive real number. In fact, this is also a non-negative real number. This is a positive real number. So therefore, this makes sense. This makes sense. So D star makes sense. अब मैं यहाँ एक और चीज क्लेम कर रहा हूँ. मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि it's in 0 1. That means the image is in 0 1. Close it at 0, open at 1. तो that means मैं आपसे कह रहा हूँ the image cannot be 1. क्या आप इस चीज को justify कर सकते हैं? Yes, पहली sir. चीज तो immediately clear है. It cannot be negative. Why? Because जो denominator और numerator है यहाँ पर they are both non-negative. In fact, the denominator is positive. So this d star it cannot be negative, so it is greater or equal to 0. और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ it cannot be greater or equal to 1. Yes, sir. इसका रीजन क्या है? Why it cannot be? न्यूमरेटर जो है सर वो डिनोमिनेटर से छोटा है. छोटा है, exactly. So it has to be less or equal to 1. मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि it cannot be 1 also. ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता. Because मैं यहाँ Yes, 1 sir. और ऊपर ले रहा हूँ. वो बताइए. यस सर. अगर हम जीरो अगर वो डी ऑफ यू कमा वी जीरो भी होगा तो भी जीरो आएगा. 1 कभी नहीं इसको आएगा. देखने का सिंपल रीजन है. इफ इट इज इक्वल टू 1 तो फिर क्या होगा? इट मींस दिस. मतलब अगर ये 1 है तो फिर क्या होगा? इट मींस d ऑफ u कॉमा v बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस d ऑफ u कॉमा v. तो फिर ये होगा. अब d ऑफ u कॉमा v एंड d ऑफ u कॉमा v ये दोनों साइड से आ रहा है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ से फिर आप ये कह रहे हैं 0 इज इक्वल टू 1 व्हिच इज एब्सर्ड, राइट? अभी absurdity क्यों आई? बिकॉज आपने ये assume किया था it's 1, so it cannot be 1 also, so it is strictly less than 1. अब यहाँ मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, इसको आप देखिएगा क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ अभी. बट
मैं आपके लिए एक्सरसाइज रख रहा हूँ। आपके लिए एक्सरसाइज ये है, शो दैट, पहली जो एक्सरसाइज है आपके लिए वो ये है, शो दैट डी स्टार, ये जो मैपिंग मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, इज अ मेट्रिक ऑन एक्स। पहली एक्सरसाइज आपके लिए ये है, आपको दिखाना है कि दिस मैपिंग इज अ मेट्रिक ऑन एक्स। ठीक, ये होगी पहली एक्सरसाइज। और दूसरी चीज जो आपको इसके बाद करनी है वो ये है, शो दैट D and D star, these two metrics, they are equivalent. That means आपको दिखाना है the identity mapping, तो इसको दिखाने के लिए कि that these two metrics are equivalent, आपको ये दिखाना है the identity mapping from x with D onto, because it's surjective, onto x with D star। आपको दिखाना है कि this is a homeomorphism। इसको ट्राई करिएगा, अगर आया तो ठीक, अगर नहीं तो लेकिन मैं कल आपसे देखूंगा ये, ऐसे नहीं यस मैं सर। बस आपको दिखाना होगा आपने क्या कैसे किया इस चीज को। बहरहाल ये जो डी स्टार इज अ मेट्रिक, ये आपको आना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू, ऑल यू नीड टू वेरीफाई द मेट्रिक रिक्वायरमेंट्स, द रिक्वायरमेंट्स फॉर विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शन टू बी अ मेट्रिक। यहाँ तो आपको सिंपली वो वेरिफिकेशन करनी है, तो ये तो आपको आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी आपको वो चैलेंज कर सकता है, ये वाली एक्सरसाइज ये आपको थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा यू कैन मेक सम इनरोड्स, अगर आप डी और डी स्टार में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे पहले। अगर आपने इस कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी ना बिटवीन डी एंड डी स्टार, तो यू कैन मेक सम इनरोड्स इनटू दिस। मेरी हिंट है यहाँ पर कि आप कोशिश करिएगा टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन, व्हेन आई से रिलेशन इट मींस एन इनइक्वालिटी, कोई यस इनइक्वालिटी सर। डेवलप करिएगा विच कनेक्ट्स डी एंड डी स्टार। वहां से आप पॉसिबली इसको टैकल कर सकते हैं, तो यू कैन अप्रोच दिस। तो ये ट्राई करिएगा, मैं लेकिन कल सुबह आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा। और मैं आज भी वही कहूंगा आपसे जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, मैं अटेंडेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आप अभी भी देखिए देयर आर ओनली 28 पार्टिसिपेंट्स और उनमें से एक मैं हूँ, दैट मीन्स देयर आर ओनली 27 पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ 50। अगर खाली 27 क्लास अटेंड करता है तो इट्स अ सीरियस इशू। आप शायद ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्लास है। फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्टूडेंट हु इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। इनफैक्ट मैं आपके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर देखा जाए ना कायदे से, बट फिर ये खुद ही अगर मतलब ना अंडर रूल्स जो है ना, मतलब बट ये अब इंसान खुद ही करता है। अब खैर छोड़िए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बट मेरी ये आपसे ये है कि उनको कन्वे करिएगा कि क्लास अटेंड करना कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।